की बात भूल के लोगों को कुछ फ्री बीज देने की कोशिश करेगी। ऐसा बिल्कुल सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री ने शुरू में कहा कि हमारा जो फोकस है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर है, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सभी वर्ग और खास करके जो कमजोर और वंचित वर्ग है उनको फायदा हो। आज हम इस बजट में देखते हैं एमएसएमई सेक्टर, आज इस बजट में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो हमारी महिलाएं हैं जो कि सेल्फ हेल्प के थ्रू काम करती, उनकी आय में कैसे बढ़ोतरी की जाए, उस पूरे बजट में 50% उसी के ऊपर बात की चिंता दिखाई पड़ती है। निश्चित तरीके से भी अरेंद्र इस पर और विस्तार से बात की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर से सरकार जब निवेश करती है तो निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलता है और लोगों का विश्वास बहाली अर्थव्यवस्था के लिए नजर आती है, और ऐसा ही एक मोमेंटम जिसका जिक्र हमारे मेहमान कर रहे हैं बनता दिखाई पड़ रहा है। हमारे सहयोगी अशीम मिश्र इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि बजट में तमाम प्रावधान किए गए, अर्थव्यवस्था के जो तमाम बारीक पहलू होते हैं उसको सिंपल शब्दों में समझाने के लिए हम असीम के पास चलते हैं। असीम, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको सिंप्लीफाई करके जरा समझाइए एक बार। इस बार के बजट से, जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा जोर दिया गया है। जो इंक्लूजन की बात की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और ग्रीन ग्रोथ की बात वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कही। तो इन तमाम चीज़ों पे, चाहे वो ग्रीन ग्रोथ की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, या फिर इंक्लूजन, सभी को साथ लेकर चलने की बात हो, इस पर बहुत ही जोर है। लेकिन हम आसान शब्दों में अगर बताएं, जो सभी की नजरें रही टैक्स स्लैब्स को लेकर, अगर हम उस पर निगाह डालें आर्यन, तो देख सकते हैं टैक्स को लेकर ये कुछ अहम बातें आई कि स्लैब्स में इस बार कुछ परिवर्तन किए गए। ये आया कि 2.5 लाख पहले सीमा हुआ करता था, उस सीमा को बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि अगर आपकी आमदनी 3 लाख रुपए तक की है तो आपको उसमें से एक भी पैसे टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छी पहल की गई है सरकार की तरफ से। आगे ये बताया गया कि 3 से 6 लाख रुपए तक अगर आपकी सैलरी है तो आपको उसमें 5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया पहला स्लैब। फर्स्ट स्लैब तो 0 था, 0 से 3 लाख तक, जो कि 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया। 3 लाख से उसके बाद 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% के हिसाब से टैक्स इसमें आपको लगेगा। अगली स्लाइड में आप देखिए, जिसकी सैलरी 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक है उसको 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और अगली कैटेगरी इसमें यह है कि जिसकी सैलरी 12 से 15 लाख रुपए तक है उनको 20% के टैक्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और उसके ऊपर जिसकी आमदनी है, मसलन कि 15 लाख रुपए से अगर आपकी आमदनी अधिक है तो आपको 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें बात यह भी आई आनंद की, जिस तरह से यह कहा गया कि 7 लाख तक की छूट मिली, जैसे कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे। अभी 2 तरह के टैक्स रिबेट को लेकर स्कीम्स चल रही हैं, एक ओल्ड स्कीम और एक न्यू स्कीम। इसमें ये इस तरह की चीजें की गई है। तो उसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत अब उसको बढ़ा के 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। लेकिन ये तो हुई टैक्स की बात, बहुत से लोग इस पर ध्यान देना चाहेंगे। लेकिन अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आरिंद की, हमारी इकोनॉमी में सरकार अगर मान ले जाए कि 1 रुपये पैसे कमा रही है, आ रहा है उनके पास, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि रुपया कहाँ से आता है। अगर 1 रुपया हमारे पास सरकार के पास आ रहा है तो उसमें आप देखिए, सबसे पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर है, वो 15 पैसे। आप एक मोटा मोटी समझ सकते हैं कि जो पैसे सरकार के पास आ कहाँ से रहे हैं। निगम कर के हिसाब से 15 पैसे वहां से आ रहे हैं, इनकम टैक्स से भी 15 पैसे के हिसाब से आ रहे हैं, सीमा शुल्क 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे, माल और सेवा कर, जीएसटी और अन्य कर में आप 17 पैसे देख सकते हैं। जो विभिन्न प्राप्तियां हैं टैक्स के जरिए, उनमें 6 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2 पैसे, और उधार जो बोरोइंग्स हैं उसके जरिए 34 पैसे। तो ये इस तरह से आप समझिए कि सरकार के पास 100 रुपए या फिर आप 1 रुपया मान लीजिए, ये सरकार के पास आने का काम करता है। लेकिन अब जाता कहां है पैसे, कहां कहां सरकार खर्च करती है, इसको लेकर हम निगाह डालें, इस पर नजर डालें तो आप देखिए कि सरकार कहां कहां पैसे खर्च कर रही है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो भी है सरकार की, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें 17 पैसे या 17 रुपए आप समझ लीजिए, अगर 100 रुपए के हिसाब से बात करें तो उसमें जा रहे हैं पैसे। ब्याज अदायगी जो इंटरेस्ट जो सरकार को चुकाने पड़ती हैं उसमें 20 पैसे जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में खर्च 8 पैसे, आर्थिक सहायता 7 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9 पैसे। जो टैक्सेस हैं और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा, चूंकि राज्यों का हिस्सा भी उनको भी देनदारी होती है केंद्र सरकार की, उसमें 18 पैसे जा रहे हैं। पेंशन उसमें 4 पैसे,
जो दूसरे खर्चेज हैं उसमें 8 पैसे और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं उसमें 9 पैसे जा रहे हैं। तो इस तरह से मोटा मोटी हिसाब सरकार के पास आ कितने रहे हैं और सरकार उसमें से खर्च कितनी कर रही है। इस बार के बजट में कुछ स्कीम्स पे अगर हम निगाह डालें आंकड़ों के जरिए, उसमें आप देख सकते हैं ये है फार्मा सेक्टर। हम जानते हैं कि वर्ल्ड फार्मेसी, जो भारत का जो फार्मा उद्योग है वो काफ़ी उन्नत है, काफ़ी विकसित है और पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी के तौर पे इसे जाना जाता है। 1250 करोड़ रुपए का इसमें बजटरी इसको आवंटन किया गया स्कीम के तहत फार्मा सेक्टर को। ये जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन केंद्र सरकार की, इसमें 70,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन की बात की जाए तो। अगला स्कीम है एकलव्य मॉडल स्कूल। हम जानते हैं कि आदिवासी बच्चों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण इस तरह के स्कूल्स होते हैं। इसके लिए 5,943 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में इस बार के। अगला प्रधानमंत्री आवास योजना, और इस योजना में हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा 79,590 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो। और अगली योजना है फेम योजना। ये फेम योजना में हम जानते हैं कि जिस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी से रिलेटेड या फिर ई व्हीकल से रिलेटेड जो योजना है फेम योजना, उसके लिए 5,172 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और आप ये देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जो विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना, ढांचागत विकास योजना है, उसके लिए 2,491 करोड़ रुपए योजना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, चाहे वो स्लैब्स की बात हो, इनकम टैक्स के स्लैब्स की बात हो, या फिर पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसको हमने बताया। और कौन कौन सी अहम योजनाएं हैं जिसके जरिए सरकार चाह रही है कि देश के तमाम हिस्सों का, तमाम सेक्टर्स का जो है वो विकास हो सके। आरेंद्र, बिल्कुल असीम, कम से कम आपको इस बात की बधाई कि जो टैक्स कटौती की स्लैब में परिवर्तन हुआ उसका फायदा तो सीधे तौर पे आम लोगों के तरीके से हमें और आपको मिलेगा। कम से कम इसकी बधाई तो स्वीकार करिए। बाकी विश्लेषण हम लोग लगातार करते ही रहेंगे मेहमानों के साथ में। शुभम जी, किस तरह से आप देखते हैं, जहां सरकार के खर्च पे हम लगातार बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ तमाम जो महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं, जो उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उसका भी बजटरी एलोकेशन बढ़ाया गया, खास करके जिससे आम लोगों के लिए मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की बात हो, चाहे आवास योजना हो या इस प्रकार की अन्य योजनाएं हो। बिल्कुल, और उसमें खास दोनों चीज़ें रेलवे और रोड। रेलवे में करीब 1 लाख करोड़ का इजाफा, जो काफ़ी ज़्यादा है। रेलवेज में इतना बड़ा चेंज उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर में कई सालों में नहीं आया है, तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है और वो ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी रेलवेज ने बहुत सारे अपने निवेश के स्कीम्स आगे लाए हैं, इसलिए उसको फाइनेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। साथ में रोड, क्योंकि रोड सेक्टर में अभी जो उछाल आया है वैसे ही चल रहा था रोड में, क्योंकि रोड में आप जितना इन्वेस्टमेंट डालते जाते हैं उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हर जगह पे रोड का जो जाल होता है वो हमारे लिए एक बहुत बेहतर चीज़ होता है। आप साथ में देखेंगे आनंद एक चीज़ कि इस बजट में, और खासकर कई सारे साल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट है, वो ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे कहते हैं, रीच नहीं है। जिस चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकते हैं, जैसे जो चीज़ बारीकी का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, उन चीज़ों पर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करना शुरू करे तो वो दोहराने की बात हो जाती है और उसमें खर्चा कहीं नहीं जाता है, वेस्टेज हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन सारी चीज़ों से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। लेकिन जहाँ पे फ्रंटियर एरियाज में जाना है, जहाँ पे दिशा निर्देश करना है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एफर्ट्स बढ़ाए हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही डायरेक्शन दे सकते हैं कि कहाँ पे विदेश से, देश के अंदर से नया चीज़ आ सकता है। आप देखेंगे जैसे AI सेंटर, जिसका जिक्र निर्मला सीतारमण जी ने किया, इसका साथ में AI को, और साथ में जो कृषि क्षेत्र में भी जो स्टार्टअप्स हैं, वो सब लिंक्ड है डिजिटल सेक्टर से। ये बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा, जिसमें हम लोग फंसे हुए थे कि गेहूं का पैदावार होगा या चावल का पैदावार होगा, उसको पैदा होगा, उसको उठाकर स्टोरेज में ले जाना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। और FCI से ये बेहतर दूसरा लोग कर सकते हैं। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ में, उनमें इन्वॉल्व ना होकर, जो चीज़ जिसमें जैसे लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज या कृषि क्षेत्र में फार्मर्स को नया उद्यम के लिए प्रोत्साहित करने का जो काम है, इन चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना उत्साह दिखाया है। ठीक उसी तरह से MSME सेक्टर में जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसका तो चलना ज़रूरी था, उसको चला रहे हैं। लेकिन साथ में जो पेन पॉइंट्स है MSME के, वो कौन देखेगा, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप कर रहे हैं। जैसे ये MSME सेक्टर के लिए एक जो बड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स, यानी कि आपका अगर पर्टिकुलर लेवल तक का आपका अगर कारोबार है,
तो उसके ऊपर प्रिजम्पटिव टैक्स लगेगा, यानी कि आपको इनकम टैक्स स्लैब्स में आप नहीं फंसेंगे कि 10%, 20%, 30%। आप एक प्रिजम्पटिव टैक्स देंगे और उसी टैक्स देकर ही आप निकल सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इन सभी चीज़ों से। इससे क्या होता है कि एमएसएमई के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें सेक्टर्स लाइक हेल्थ में, जहाँ पे ऑलरेडी आयुष्मान भारत स्कीम चल रहा है, तो उसमें भी ज़रूरत क्या है कि उसको सेक्टर को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के तहत लाया जाए। ये चीज़ें अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है डायरेक्शन फाइंडिंग का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बेहतर कोई नहीं कर सकता है, और वही इसीलिए इस बजट में वो काम में आता है, बजाय ये कि वो लुभाने वाली बहुत सारे स्कीम्स जो मोटा मोटी दिन के इनमें उससे कुछ खास फायदे नहीं होते हैं, वैसे स्कीम उसका रोल आउट नहीं किया गया है, और जो मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी था। लोक लुभावन बजट इसीलिए इसे नहीं कहा जा रहा है, उस परिभाषा में नहीं रखा जा रहा है। प्रोफेसर अनिल, रेलवे में जो आवंटन हुआ वो अभी तक का सबसे ज़्यादा आवंटन है, 2013-14 की तुलना में 9 गुना ज़्यादा है। अब अगर आम आदमी से जुड़े इस रेलवे की हम बात करें, इतना आवंटन किस तरह की आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम वो सुविधाएं जो रेलवे के जरिए आम आदमी को मिलने जा रही हैं? देखिए, इसके दो आयाम हैं। एक तो सुविधाओं की बात है, और दूसरी बात कि जो हमारे रेलवे लाइंस हैं, ट्रैक्स हैं, कोचेज़ हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, उनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। उनको मॉडर्नाइज करने के लिए कैपिटल आउटले की ज़रूरत है। आज जब हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और सेमी स्पीड, हाई स्पीड ट्रेन की बात करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, उसके मुताबिक बने। तो ये जो आउटले है वो इसके काम आएगा। दूसरा, आज जो हम हाई स्पीड ट्रेन के कोचेज़ हैं, वो आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ते हुए उन कोचेज़ का हम निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में ही कर रहे हैं। आज देश के कई हिस्सों में वंदे मातरम एक्सप्रेस चल रही है, और उसमें जो कोचेज़ बने हैं वो भी भारत में ही बने हुए हैं। आप देखिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। रेलवे में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि वो मॉडर्नाइज हो। दूसरा, जो टाइम ऑफ ट्रैवल है, चाहे वो ट्रैवल का टाइम यात्रियों के लिए हो या सामान की को पहुंचाने, आवाजाही के लिए हो, दोनों में अगर समय कम लगेगा तो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी, जो कि आज की ज़रूरत है। हम ग्लोबल सप्लाई चेन से नहीं जुड़ सकते अगर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ना हो। तो अगर हम इस दिशा में देखें तो मेरे को लगता है कि ये रेलवे में बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि हम इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट करें, जिससे न केवल रेलवे मॉडर्नाइज हो, ग्रोथ होए, साथ साथ उसके अंदर रोजगार के अवसर भी पैदा हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब आप इस प्रकार का ढांचा तैयार करते हैं तो उसका मल्टीपल इफेक्ट होता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। चरण सिंह जी, चूंकि हम रेलवे की बात कर रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं सरकार का फोकस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे दिखाई पड़ रहा है। रेलवे पे, रोड पे, एयरवेज पे, वाटरवेज पे, हाईवेज पे लगातार उस प्रकार का फोकस है, और सरकार उस फोकस पे लगातार काम भी कर रही है, और इस बजट में भी वो इशारा साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आपने ग्रोथ का जिक्र किया था, उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक आधार तैयार करेगा? इसमें कोई शक ही नहीं है, रेलवे को मॉडर्नाइज करना इसलिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि एक तो रेल नेटवर्क जो हमारा बिछा हुआ है, और उसके ऊपर अगर हम वंदे मातरम जैसी ट्रेन जो इतनी 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, और बुलेट ट्रेन का हम लोग सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें इसे मॉडर्नाइज करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि इस दौरान सरकार जब से आई है, इन्होंने जो रोड कॉरिडोर शुरू किए हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव रोड कॉरिडोर शुरू किए हैं। इलस्ट्रेशन के रूप में देखिए, दिल्ली से बॉम्बे जिस तरीके का रोड कॉरिडोर बन रहा है, एकदम मॉडर्न रोड कॉरिडोर बन रहा है, और छोटे छोटे कॉरिडोर जो अभी बने हैं, दिल्ली से देहरादून, ये सारे जो दिल्ली से वाराणसी, ये सब सारे जो बन रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना चाहते हैं, कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो रोड के साथ रेल को भी बढ़ाना जरूरी है। एयर ट्रांसपोर्ट में भी आपने देखा बजट में कहा गया कि 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हेलीपोर्ट्स बन रहे हैं, वाटर एरोड्रम्स बन रहे हैं, एडवांस लैंडिंग जोन्स बन रही है। तो एक किस्म से इंफ्रास्ट्रक्चर से मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो एक भारत जैसे कहते हैं ना, कहीं से कहीं भी आप बिना सीमलेसली, बिना ज्यादा प्रॉब्लम के जा पाएंगे। एक चीज और है, ट्रांसपोर्ट हब्स, क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स की भी बात कही गई, उसमें 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भी बात कही गई है। तो वो भी मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत जरूरी रोल प्ले करेगा। वाटरवेज को जो डेवलप किया जा रहा है कोस्टल लाइन के साथ साथ,
वो मुझे लगता है कि वो दूसरी बहुत बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ताकि ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाएगा। इससे कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स कंपिटेटिव हो जाएगा और हमारे लिए, बिजनेस के लिए अच्छा होगा। सड़क परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास में लगातार सरकार 2014 के बाद से इस पर काम करती रही है और हर बजट में इसमें एक इजाफा देखा गया है, नया दृष्टिकोण देखा गया है। वही दर्शाता है जिस तरह से हमारे मेहमान भी बता रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि अमृतकाल देश में जारी है, यानी जब भारत की स्वतंत्रता के 100 साल होंगे तब भारत की आर्थिक स्थिति कैसी हो, विनिर्माण क्षेत्र में क्या उपलब्धियां देश के पास हो, पर्यावरण को लेकर भारत की तैयारी कैसी हो, सभी का बजट में खास ध्यान रखा गया है। वहीं इनकम टैक्स वालों का नया ढांचा मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया अमृतकाल का बजट। साल 2023 और 24 में देश के विकास पर कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, यानी बजट का साइज 45 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं दुनिया में महामारी और युद्ध की विभीषिका के बावजूद भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री ने बीते 9 साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा। उन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में इस दौरान दोगुने का इजाफा हुआ है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से उठकर अब 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं उन्होंने अमृतकाल में जन भागीदारी और समावेशी विकास का खाका रखा। बजट में 7 प्राथमिकताओं को जगह दी गई है। ये अमृतकाल के विजन के तहत शामिल किए गए हैं, जिसमें समावेशी विकास, ग्रीन ग्रोथ, बुनियादी ढांचे में निवेश, युवा शक्ति के कौशल विकास और वित्तीय क्षेत्र और क्षमता विकास पर जोर दिया गया है। The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट भी था, जिसमें वित्तीय अनुशासन पर स्पष्ट फोकस रहा। वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान जताया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में इसके 5.9% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में वित्तीय घाटा 4.5% आने का भरोसा भी बजट के दौरान दिया गया। इसकी खास बात रही टैक्स स्लैब में छूट देना। अब 7 लाख रुपए के वार्षिक आय पर टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए की ही थी। नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक 15% और 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। वहीं 37% के सरचार्ज को घटाकर 25% कर दिया गया है। साथ ही 25 लाख रुपए तक लीव इनकैशमेंट पर अब टैक्स नहीं देना होगा। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the बजट में विकास और रोजगार के लिए पूंजीगत निवेश में लगातार तीसरे साल बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। ये 33% बढ़कर अब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। वहीं रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जबकि सड़क परिवहन के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र शुरू करने की घोषणा इस बजट में की गई है, जिसके तहत 7.5% ब्याज मिलेगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम जमा राशि की सीमा बढ़ाकर 15 लाख से 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्ज की घोषणा की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 60,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण इलाके में उद्यमिता बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास के अलावा मिलेट का ग्लोबल हब बनाने के लिए श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का है।
वहीं ग्रामीण इलाके में उद्यमिता बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास के अलावा मिलेट का ग्लोबल हब बनाने के लिए श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया गया है। Now to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level. भारत में ईज ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट जल जीवन मिशन के लिए, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन दिया गया है। टियर 2, टियर 3 शहरों में इंफ्रा विकास के लिए प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर जीडीपी का 5% खर्च बजट 2023-24 में किया जाएगा। वहीं मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का प्रावधान किया गया है। जनजातीय इलाकों में जीवन स्तर में सुधार के लिए पीबीटीटी विकास मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. वहीं ग्रीन ग्रोथ और क्लीन एनर्जी के लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थाओं को 15% टैक्स का लाभ और शुगर कॉपरेटिव्स को 10,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नुकसान भरपाई की समय सीमा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने बजट की बड़ी बड़ी बातें, किस प्रकार से तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की गई है इस पूरे बजट के माध्यम से। इस बीच में एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर संजय गुप्ता जी, जो कि वाइस चांसलर हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन के। सर बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा शोभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर चरण सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर चरण सिंह जी, किस तरह से आप इस बात को देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पे भी काफ़ी फोकस दिखाई पड़ रहा है, साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी खर्च करके वहाँ पर इकोनॉमी में एक तरीके से सहायता देने की कोशिश करने के प्रयास साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, सरकार ने अभी आपने सुना जैसे ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल मिशंस के नाम पर काफी कुछ करने का प्रयत्न होने वाला है। आर्टिसंस के लिए काफी कुछ होने वाला है। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए से काफी कुछ होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पर ज्यादातर हमारे लोग रहते हैं एग्रीकल्चर एरिया में, जैसे मैंने पहले भी कहा, मिलेट प्रोग्राम बन रहा है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर्स बन रहे हैं, उसी के साथ साथ ये बाकी की चीजें जो एमएसएमईज कह लीजिए या कह लीजिए आर्टिसंस एंड ट्राइबल एरियाज को बढ़ाने की बात हो रही है, सब उसी के साथ साथ हो रहा है। तो प्रयत्न ये है कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा और अगर हम इसको फाउंडेशन माने अगले 25 साल की, जो प्रधानमंत्री आजकल इंडिया एट 100 की बात कर रहे हैं, ये बजट उसको पूरी तरह फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है। और आगे जाके मुझे लगता है कि जिस तरीके वित्त मंत्री जी ने अभी भी आज के भाषण में भी कहा कि हम लोग 2025-26 में ये अचीव करेंगे, कॉन्टिन्यूटी बनती आ रही है पिछले वर्षों के साथ साथ, वही कॉन्टिन्यूटी आगे जाएगी। तो ये फाउंडेशन के तौर पर रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए ये काफी अच्छा पोजीशनिंग वाला बजट है। और ये ज्यादातर स्कीम्स जो मैंने बताई है। एक चीज और मैं कहनी चाहूंगा, जब आप ऐसे कॉरिडोर बनाते हैं जैसे दिल्ली से बॉम्बे तक, साथ में जितने भी सटे हुए एरियाज होते हैं, सबकी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। उसी तरीके जहाँ 50 हेलीपोर्ट्स बनने वाले हैं, जहां तक टूरिज्म का सवाल है, वहां पर भी लोकल एरिया डेवलपमेंट बहुत हो जाती है। जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने जाके नॉर्थ ईस्ट में 2 एयरपोर्ट खोले अभी हाल में ही, तो मुझे ये लग रहा है कि ये सिर्फ हम लोग सबका साथ सबका विकास समरी कह लें कि सबके लिए ये लाभदायक है।
और ग्रोथ ओरिएंटेड और इम्पल्स प्रोवाइड करेगा लोकल एरिया में ग्रोथ क्रिएट करने के लिए। प्रोफेसर अनिल, इस पूरे बजट में हम देख रहे हैं जहां एक तरफ आधुनिक युग के पैमानों पर भारत पिछड़े नहीं, जोखिम नहीं उठा सकता आज भारत उस पिछड़ने का, और उसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सेंटर्स खोलने की जो बात है इस बजट में, वो एक तरफ है। वहीं दूसरी तरफ 2023 मोटा अनाज का साल है। मोटे अनाज को लेकर भी जिस तरह से सरकार तेजी से आगे ही नहीं बढ़ रही है, लेकिन तमाम और आयाम भी खोल रही है। क्या आपको लगता है कि एक तरफ अपनी जड़ों के साथ जुड़ाव को और मजबूत, जिसका कि एक बड़ा असर देश की जनता की सेहत पर भी है? देखिए, मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी रहे हैं, उससे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने आप को सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी। हमारा 50% जीडीपी सर्विस सेक्टर से आने लगा। लेकिन आज समय की मांग है कि हम एक टेक बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी बने, तो ही आज हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। तो इस पूरे बजट में दो चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया मेरी नजर में। पहला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ग्रोथ में कमजोर और वंचित लोग पीछे ना रह जाएं, और ऐसे सेक्टर जहां की एक्सपोर्ट के बहुत अच्छे पोटेंशियल्स हैं और हमारे फार्मर्स की इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। सरकार ने संकल्प लिया है कि फार्मर्स की, किसानों की इनकम को डबल करना है। वो डबल खाली जो ट्रेडिशनल तरह की वो खेती करते हैं उससे नहीं हो सकता है। उसके लिए मिलेट में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और काफ़ी ये रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है। और ये सरकार के आग्रह पर ही, मोदी सरकार के आग्रह पर ही इस साल को मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। तो इस सेक्टर में जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, उसमें क्या बढ़िया प्रैक्टिसेस हो सकती है, उसके लिए आज हम देख रहे हैं कि एक रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर की घोषणा भी इस बजट में हुई है, और साथ साथ एक फंड को बनाने की भी इसमें बात कही गई है। जी, प्रोफेसर संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय जी, मिलेट के क्षेत्र में ग्लोबल हब भारत बने आने वाले समय में, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी भारत ग्लोबल हब विश्व के लिए बने, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत आत्मनिर्भर तो हो ही रहा है, लेकिन विश्व के लिए भी एक बेहतर डेस्टिनेशन साबित होने जा रहा है। इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? अगर 5 बड़ी बातें इस लिहाज से हम पूछें कि विश्व के लिए भारत एक बड़ा आकर्षण। मैं जो आपका इससे पहला क्वेश्चन था उसका आधा पार्ट रह गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है, जो कि डेटा को नॉर्मलाइज करके, एनोनिमाइज करके एक्सेस प्रोवाइड करेगा एकेडमिक्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना डेटा के काम नहीं कर सकता, इसीलिए साथ साथ इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना एक बहुत बड़ी बात है, जो एक दूरदृष्टि दिखाता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अभी मेरे ख्याल से 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से स्टार्ट किया है। इसको अगर थोड़ा वाइडर कवरेज देते, क्योंकि ये एक एरिया है जिसमें हर यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। सिर्फ 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस से काम चलने वाला नहीं, लेकिन इनका भी फोकस इन्होंने हेल्थ, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल सिटीज़ और इन सब पे दिया है। इसी के साथ इन्होंने 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो अर्बन प्लानिंग में भी डिसाइड किए हैं, क्योंकि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ इन सभी को सस्टेनेबिलिटी और स्मार्टनेस के उसके ऊपर डेवलप करने की ज़रूरत महसूस की गई है और उसका फोकस किया गया है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं, जैसा कि टूरिज़्म के ऊपर फोकस आप बता रहे हैं कि 5 ऐसे क्या पॉइंट्स हैं। अब आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे आप कह रहे हैं कि 50 सेंटर्स ऐसे डेवलप किए जाएंगे जो कि फुली डेवलप होंगे टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक है। उसके साथ सारी सिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि विश्व स्तर की सिटीज़ की एमिनिटीज़ के बराबरी कर पाएँ। उसके लिए ये अर्बन प्लानिंग और उसका जो पूरा फोकस है वो उस दिशा में काम करेगा। साथ ही साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात हुई है। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने की है, यूनिटी मॉल्स बनाने की बात की। यूनिटी मॉल्स जो है वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है उसके प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स रखे जाएंगे, जीआई प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे ना। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डिमांड पुल प्रोवाइड किया गया है, जो कि
एक टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से और इस हस्तकला को प्रमोट करने की पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ी दूरदृष्टि का जो है वो दिखाई गई है कि एक पुल इस क्षेत्र में प्रोवाइड किया गया है। तो ओवरऑल अगर आप ये सारे वो देखेंगे जो इन्होंने प्रपोजल्स दिए हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर अनिल जी, आपको लगता है कि अब जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन इकोनॉमी है, उस दिशा में भी प्रयास साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनकी तरफ, ईवी की तरफ जाना, स्क्रैपिंग को प्रमोट करना, वो एक जो सोच है सरकार की, उसके बढ़ते हुए कदम भी इस बजट में साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात पिछले बजट में की थी और इस बजट में उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए न केवल बजट का प्रावधान है, राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित किया गया है कि जो हम आपको अगर आप घाटा करते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं, तो वो आपको इन मुद्दों पर खर्चना होगा। उसमें स्क्रैपिंग भी एक है। सरकारों से कहा गया है कि आपके पास जो जितने गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं जो कि पुराने हो गए हैं और पॉल्यूटेड हैं, उनको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अपने व्हीकल्स के लिए स्कीम बनाई है कि उनको हमें टाइम बाउंड प्रोग्राम में स्क्रैप करना है। दूसरी बात, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली डायमंड्स की बात कही गई है जो कि कार्बन का इमिशन भी कम करेगा और ये एक सस्टेनेबल है। आज हमारी जो निर्भरता रॉ डायमंड के इंपोर्ट के ऊपर है, उसमें उसके अंदर भी कमी आएगी। और जो तीसरी बात, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात है। मेरे को लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने पीछे घोषणा भी की और कैबिनेट में भी ये पास हुआ 10 दिन पहले। इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को न केवल पूरा कर सकते हैं बल्कि हम इससे निर्यात के भी काफ़ी अच्छे अवसर हैं और इसमें काफ़ी अच्छे जॉब के भी पोटेंशियल्स हैं। तो आने वाले दिनों में, जैसे सरकार ने पिछले 3 सालों में सरकार का रुझान इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे हुआ, आज वो रियलिटी बन गया है और आज हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि ईवीज को हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो इसमें लेकिन साथ साथ जो जुड़े हुए आयाम है, इसमें जो बैटरीज हैं, बैटरी के सेल्स हैं जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें अभी इंपोर्ट ड्यूटी की बात कही गई है। लेकिन क्योंकि ये PLI स्कीम में है तो बहुत जल्द इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी और हमारी निर्भरता इसके ऊपर भी कम हो जाएगी। तो न केवल इस बजट में बल्कि पीछे 3-4 साल के बजट में हम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत चुनिंदा कुछ देशों में है जिसने क्लाइमेट चेंज की बात को बुलंद किया है और हम इसमें सिग्नेटरी हैं और प्रतिबद्ध है कि हम जो कार्बन और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आज पोल्यूशन से क्लाइमेट में जो चेंजेस एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसको हमें कम से कम कैसे कम करना है, कार्बन इमिशंस को कैसे कम करना है। तो ये उसी दिशा में एक कदम है। आज जबकि G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत न केवल कहता है बल्कि इसको करके भी दिखाया कि हमारी पॉलिसीज में, हमारी पॉलिसीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और वित्त मंत्री जी ने इस बजट को ग्रीन बजट और ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है। तो ये दिखाता है कि इसमें सरकार की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। 7 प्राथमिकताओं में ग्रीन ग्रोथ भी, हरित विकास भी एक प्राथमिकता है। प्रोफेसर अनिल, आपने ई व्हीकल्स की बात की, उनकी व्यवहारिकता यानी कि आम जनता तक उसकी पहुंच, आपने जिक्र करा उन तमाम चीज़ों का भी जब ई व्हीकल्स की बात होती है कि कैसे उसको भी सुलभ बनाया जाए और लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, जिसमें बैटरीज का भी आपने जिक्र करा। उस दिशा में भी इस बजट में आपको क्या लगता है किस तरह से हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सरकारी जो वाहन, सरकार भी काफ़ी वाहन खरीदती है। तो मेरे को लगता है कि पहले जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप करके उसके बाद जब नए व्हीकल्स को खरीदने की बात आए तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही खरीदने चाहिए। और आज एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुरू में ये थोड़ा अडॉप्ट करने में लोगों को परेशानी हुई कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी और कितना चलेगी। आज हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी विकल्प है। ऐसे ऐसे हमारे पास वाहन आ गए जो कि 300-400 किलोमीटर तक एक चार्जिंग में चल जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की ज़रूरत है। हमें चार्जिंग स्टेशंस अलग अलग पॉइंट्स पे, पेट्रोल पंप पर, पार्किंग में कुछ बन रहे हैं, बड़े शहरों में बन रहे हैं। लेकिन जब तक हम इसको Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में नहीं लेके जाएंगे तो ये बहुत सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। संजय गुप्ता जी, आपको लगता है कि सरकार का फोकस जहां ग्रीन इकोनॉमी को है,
इकोनॉमी के साथ साथ इकोलॉजी का भी ध्यान रखा गया, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी फोकस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है ताकि हम एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख सकें और हमारी एनर्जी जो ज़रूरतें हैं उसको भी हम पूरा कर सकें। बिल्कुल, अगर आप इनके प्रपोजल्स देखेंगे तो बड़ा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम तैयार किया गया है कि आप ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन सिटीज, ग्रीन मेजर्स, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम और उस स्कीम से कैसे सिटीज़ को और स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो बड़ा एक स्पेसिफिक प्रपोजल निकल के आया है। और इसी तरह का एक नेशनल एजेंडा की ज़रूरत है अगर हम ग्रीन के दिशा में मूव करना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की आपने बात की, उसका अगर आप एक्सपेंडिचर वो देखेंगे तो डबल कर दिया गया है आगे उसके लिए। तो मैं बिल्कुल अनिल जी से सहमत हूँ कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। अगले 5 साल के अंदर हमारी जो सिटीज़ हैं उनमें 30 से 40% जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होने की संभावना है। सर, आपको रोकना चाहेंगे, हम इस वक्त सीधे रुख करते हैं। वित्त मंत्री बजट भाषण के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रही हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री, उनके साथ में दोनों ही वित्त राज्य मंत्री, तमाम जो सेक्रेटरीज हैं वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए, मुख्य आर्थिक सलाहकार, इन तमाम एक तरीके से वो पूरी टीम जिन्होंने मिलकर बजट तैयार किया है, जिनकी एक लंबी मैराथन बैठकों का दौर चला है, मंथन हुआ, उसके बाद में ये बजट तैयार हुआ है और बजट भाषण जो कि आज वित्त मंत्री ने दिया, उसके बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे दिल्ली से लाइव। Good afternoon, friends. I welcome you all to this important post-budget press conference today. At the outset, I would congratulate Honorable Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji for presenting a growth-oriented futuristic budget for the year 2023-24. I welcome you, ma'am, to this press conference. I also take this opportunity to welcome the Honorable Ministers of State Sri Pankaj Chaudhary ji and Dr. Bhagwat Karaj ji. On this occasion, we also have with us Finance Secretary Expenditure Dr. T.V. Somanathan, Secretary Economic Affairs Sri Ajay Seth, Secretary Deepam Sri Tuhin Kant Pandey, Secretary Revenue Sri Sanjay Malhotra, Secretary Financial Services Sri Vivek Joshi, Chief Economic Advisor Sri V. Anant Nageshwaran. I welcome you all to this press conference. Friends, first the Honorable Minister will give her opening remarks. Thereafter, we will be taking questions from you. Before I request the Honorable Minister, I must request you all to please follow the norm of one organization, one person, one question, please. Don't club too many questions together. That will help us give opportunity to friends. With this, I request Honorable Minister of Finance to proceed. Please begin the opening remarks. Thank you. Good evening, and thank you for being here now after the budget has been laid on the table of the House. As opening remark, I'll just give a few indications of what has been highlighted in the budget. Broadly, I think the 4 emphasis points are on empowering women, giving a lot more attention to the SHG groups which are in the rural areas, trying to scale them up, give them the opportunity to brand and produce and also market their products in a far more scaled up and professional manner. Emphasis on tourism and training of youth for readying themselves for tourism, specific action for 50 destinations where comprehensive
tourism action plans will be introduced. Then what is being called as PM Vikas, looking at Vishwakarma, people who create things, make things out of their hands using tools. In some states they are called Vishwakarmas, in some other states some castes are referred to as Vishwakarma, but what we mean here is to cover all those artisans and craftspeople who do things with their hands using some tools, so not specifically only to some particular communities, but to all who create the soft power of India through their craftsmanship. Then the 4 is green growth, the 4th one, which is in every sphere of life we have policy interventions and enabling provisions made so that India moves fast on the transition to renewable energy, the investments made for hydrogen mission, renewable energy transitional facilities which we need, natural gas, and also looking at biogas, also evacuation of power from renewable energy sources located in Ladakh to the rest of the country. So those are 4 highlights which I'd like you to go back to see the scale in which we are approaching these issues and the impact that it will have on large sections of India's population. Then, of course, I gave 7 priorities, which began with talking about inclusive growth, investments in infrastructure, also reaching the last mile so that those who are still left without a house or a sanitary facility or a road which is reaching them, and so on. So the last mile, reaching the last mile for those who desperately need that kind of a link are all being covered. Then we are also looking at a very futuristic fintech financial sector for which we have brought in some specific ideas. We are looking at also improving the industrialization of this country, where people will be trained for Industrial Revolution 4.0, which means they're going to be trained for AI, IoT, using Web3 in other words. So training manpower to ready themselves for industries which are rapidly becoming industrialized in the Web3 context. Then digital economy, unleashing the digital power of India in various walks of life, setting up an artificial intelligence research center, center for excellence. So all these are in part A. There's a lot of increase in the agriculture credit availability, 20 lakhs being made available for agriculture credit. Also a sub-scheme under the PM Matsya Sampada Yojana, making sure that people living in the coastal areas are going to benefit from it, fishermen are going to benefit from it. Now, if largely the part A has looked at these, part B has aimed at rationalizing the customs duties, also making sure personal income tax, after a very long time, has had substantial changes which will benefit the middle class. And also because this country has been waiting for direct taxation to be simplified, also waiting for direct taxation to be a lot more easy in compliance, and therefore the new taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. But the new one obviously is now attractive because it gives greater rebate. It also provides for a simplified and smaller slabs, lower rates of taxation, and also slabs which are nicely broken down. So with all this, I think the budget
I've not gone into specifics, but I thought as an opening remark, this much will be sufficient to say this is a budget which is beautifully balanced, both growth considerations, because the capital investment has never before seen double-digit investment announcements. 10 lakh crore, which includes 1.3 lakh crores being given to states, is going to give a big leg up for capital investment from government. So balancing that I'm talking about is looking at public sector investments, continuing that good tradition of capital investment in infrastructure, and also attending to MSMEs, because they are the engine of growth. We've given them relief, we've also given them new access, we've extended and widened the emergency credit liquidity guarantee scheme, also given them back their securities, 95% of it, even if they fail to deliver on contractual promises which were during the COVID pandemic. So the balancing is, one, we could sustain the capital infrastructure expenditure from the government, simultaneously in the private sector give a lot of push and impetus for the MSME, and not forgetting the individuals, the middle class individuals who needed that kind of a tax breaks and relief through taxation. So the large macroeconomic considerations have also been kept in mind. The fiscal consolidation has not been kept in the back burner. We've attended to it. We are respecting the glide path we gave ourselves 2 budgets ago. 6.4 this year fiscal deficit, and the forthcoming year for which the budget is presented now, 5.9% fiscal deficit. So broadly, I leave it at this. I suppose when you ask questions, we can answer the rest. Thank you. Thank you for coming here today. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Shishir here from Hindu Business Line. Ma'am, my question is that when there is an announcement for 7 lakh rupees under new tax regime, that will no tax to be paid, and then you are talking about rejigging the new tax regime, does this mean that this is the end of exemptions for various incentives, exemptions for investment and savings? Well, I've already addressed this, I think. We want to make the new tax regime, which is without exemptions, attractive enough for people to think that this will be the best option for them because it gives them better rates. It doesn't also make the compliance a burdensome exercise. If rates are so low, you're going to benefit net by paying lesser tax. Even those exemptions that you would have otherwise gained from would have resulted in probably net amount being the same. So we made this a lot more attractive. But if there are people who still think that being in the exemption regime, which is the old regime, benefits them, they're welcome to continue where they want. But yes, the ultimate interest is to make the simpler regime more attractive. And that is why we've come up with this. Ma'am, firstly, many congratulations on that fiscal consolidation, because I keep asking you that question. But the issue today is about people in terms of, there is a big gamble in terms of capital expenditure. When you do that, does it actually trickle down to the people? Does it create jobs? I know you've been doing this for the last 2 years. Are you sure that this will really trigger off job creation, one, to, money in the hands of the poor people? The second, of course, is about inflation, which again, you, like last year, you haven't really touched about it, but you have had the letter from RBI. Your chief economic advisor yesterday says we are in uncertain times, but we hope that it will be under the check of 4 to 6%, hopefully the lower band of RBI. What is your answer to both these points? First of all, on the inflation, I think, yeah, you're right in saying RBI wrote a letter and what. But in the meanwhile, you've seen inflation come down, both the CPI and WPI. Action is being taken by the government. We take inflation-related steps
as and when things develop in the ground and in response to it. And that has borne result. So inflation is not something which we are looking the other way while it is changing up and down. We have kept attending to it, and as a result, you find the result. On fiscal consolidation, you asked me the question, and I've already explained that we've attended to it with all earnestness, having respected the glide path we gave ourselves earlier. Jobs. Yeah. See, first of all, I find it a bit odd you may want to ask this question like this. Capital expenditure. I would have appreciated if you asked me, you said something in the BE, but you have not really exhausted what you put forth. You have not really used it in the ground. It is unfulfilled in the sense targets have not achieved. I would have been happy to answer if that were to be the case. But you're asking me a question about, in the sense you are implying that we have fully utilized what has been kept for capital investment. Therefore, it makes me feel odd that you're asking a question of actually have jobs been created or not. When projects are undertaken and money is utilized, and that it is utilized is coming through from the budget statement, how would the projects get completed without manpower, without jobs? Not all projects can be completed, even 1%, without human intervention. So obviously jobs are happening in the ground. So ma'am, I want to ask you, ma'am here. Ma'am, I want to ask you what percentage of taxpayers had moved to the new tax regime in the last assessment year? And is there a number that you expect, 50%, 60%, whatever? And number two, ma'am, there's a specific mention for expenditure towards MSMEs. Now, is there an estimate of how much, what was the dues that companies had claimed as expenditure and which has not actually been paid to the MSMEs? Sanjay, you want to answer on? On your second question, that is on the MSMEs, well, we don't have that data. Certainly, we don't have that data. And it's not, I mean, we don't take that data from the taxpayers in their returns. So that data we will not have. But certainly, you know, we are all aware of this huge problem of timely payments not being made to the MSMEs. So in that direction, you know, this is certainly a positive step. Coming to your first question on the exemption-less regime, let me say that for companies, the 22% tax regime that we got, 61% of our tax now, the corporate tax, more than 60% is actually coming from the exemption-free tax regime. Individuals' data we will not have, but we are very hopeful that this particular scheme for individual taxpayers, the PIT, I think the majority would prefer. I mean, all of you, if you all do your own calculations, I think majority here would be now wanting to shift irrespective of their incomes and the deductions and exemptions that they claim. They would be finding it more attractive to shift to the new tax regime, majority of them. Ma'am, very good afternoon. Congratulations on a great budget. It's very clean, simple, nicely done. Ma'am, one quick question on CAPEX and one more on petroleum subsidy. Ma'am, your CAPEX for RE is lower actually in terms of the spend as of now. But the target is, you know, greatly stepped up for FY24. So what gives the confidence that it will be all utilized? That CAPEX RE is lower, ma'am. 7.28 versus slightly lower. And a big jump for FY24. So what gives the government the confidence that all of it is going to be utilized and well spent? That's one, ma'am. And second, ma'am, on the petroleum front, the LPG subsidy has been kept pretty low.
You had announced certain additional measures last year in May, along with the deep cuts in excise on petrol, diesel. So what happens to those announcements regarding LPG subsidy? They have not been rolled over. And plus, ma'am, there is a demand coming in from oil cores now after LPG losses that you have made good by giving them money. That something needs to be done on fuel also. So would the government What was consider? the last bit? Something has to be done for who? Basically, demand coming in from oil cores in terms of Oil marketing companies. Yes, cash No, compensation. The money for which fuel. is now being given is not for that. Not for that, ma'am. So, all of it. So, on your first question on capital expenditure. So, yes, the revised estimates are about 97% or 98% of the budget estimate. Yes, there is a slight deviation. It's mainly on the state capital expenditure, which is falling short of the 1 lakh crore. Actually, the central capital expenditure is going to exceed the budget estimates. State capital expenditure is not expected to reach the 1 lakh crore figure because some portions of the state capital investment scheme have reform conditions. So some states have not been able to meet some of the conditions. Therefore, we expect, I think the figures are there, about 76% of the state capital expenditure scheme is likely to be spent. That's the revised estimate. So the shortfall is actually on the state side, not on the central side. Point number one. What gives you the confidence for next year? I think if you look at the allocations that have been made, they've made in actually the increments are in 4 clear areas. One, railways. The railways has enough projects to absorb the additional capital expenditure. The second is highways. They have adequate projects running to absorb this capital expenditure. The third is states, 30,000 crores. Now, yes, there will always be a challenge, but I think the states are gearing up now. This 2 years of this experiment has helped them to improve their spending capacity. And we are also seeing an uptick in the second half of this year on the state capital expenditure. So I'm reasonably confident that the states will absorb the 1,30,000 that has been provided. And the other big item on the central side is the petroleum capital expenditure, which is for retrofitting of refineries to meet emission standards and pollution standards, and partly for augmenting our strategic reserves. So I'm quite confident that we'll meet the expenditure targets. Please. तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम, जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो 65,000 से 50,000 किया है और नेक्स्ट ईयर का 51,000 किया है। तो मैम, इससे हम ये समझें कि जो दो गवर्नमेंट बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन होना था और जो 2 इंश्योरेंस कंपनीज का जो प्राइवेटाइजेशन होना था वो अब 2024 के बाद ही संभव हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम जो टारगेट ये कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा संजय सर से है। जैसा कि आपको विदित है कि डिसइन्वेस्टमेंट तो मार्केट कंडीशंस और कई चीज़ों से निर्भर करता है, तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिकल और प्रूडेंट टारगेट है वो रखा गया है। Ma'am, I am Monica from the New Indian Express. Ma'am, what was the need to lower effective tax rate for high income group at this point in time? And also tax collection at source has been increased from 5% to 20% on overseas tour package. So what is the reason behind this massive increase? See, the tour packages are generally taken by people whose effective tax rate is certainly more than 30%. So if we are charging them 20% TDS, I don't think it is high. We have, our attempt always has been to charge TDS at more or less similar rates, if not exactly the same rates. So that answers your question number 1. Question number 2 on, I think you are referring perhaps to surcharge, which has been reduced. Well, our rates, the highest tax rates in our country were amongst the highest, even more than, some of the developed countries. And so, in any case, it was introduced as an interim measure, and so that has now been reduced.
so that the effective tax rate, highest effective tax rate becomes 39%. I'd just like to supplement that. There is a consistent theme, if you see, both on the new tax regime and on the changes that you're seeing in this budget, that the move is towards lower rates but fewer avoidance measures and exemptions. So if you look at high net worth individuals, there are a number of tax avoidance removal measures in this budget, along with the reduction in surcharge. So if you look at market-linked debentures, if you look at very high value insurance policies, and a few other measures, so the marginal rate is coming down, but some of the devices used predominantly by those in that highest marginal tax rate are also being rationalized. So it's not necessarily a net reduction, it is a reduction from a high marginal rate inducing certain avoidance devices to a lower marginal rate with fewer opportunities to avoid. 74, please. One's mind being part of a political party. But consistent with what we believe, we placed our emphasis and priorities on those. And that's what you've seen in the budget. मैडम मेरा सवाल है आपसे। मैं संजय शर्मा हूं लोकमत अखबार से। मैडम आपके बजट में विपक्ष की तरफ से कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं है ये, लेकिन इस बजट से महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें थी। घर की महिलाओं को जो महंगाई से पीड़ित थी, रसोई गैस के सिलेंडर के दुगने दामों से पीड़ित थी, कहीं ना कहीं आटे से लेकर के रोटी तक सारी चीज़ें महंगी हो गई है। तो क्या इससे आपको लगता है कि कुछ इसमें महंगाई पे भी फर्क पड़ेगा और घर की जो रोटी है, जो घर की जो रसोई का जो सामान है, उसमें इस बजट से कुछ फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट का निर्णय को देखे होंगे कि गेहूं के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए आदेश हुआ है, जिससे गेहूं के दाम कम होने के इतना क्लियर इंडिकेशन है, जिससे सीधा घर में रसोई में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सो उसको आप बोलना नहीं है, ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ बजट में नहीं बोले, मगर बजट से बोलने से पहले एक्शन ही हो गया है ना, कि घर की रसोई के लिए गेहूं आटा के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए निर्णय सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। एक मिनट। साथ ही साथ जो है महिला जो है वो भी एक परिवार का सदस्य है, तो जो रिलीफ जो इतना टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स में दिया गया है वो भी परिवार के पास में और महिला के पास में आएगा, उसके हाथ में आएगा, जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सकती है। सो वो भी एक महिला के लिए, हमें नहीं देखना चाहिए कि महिला के लिए नहीं है, वो भी महिला के लिए एक बेनिफिट है। गेहूं पुरुषों के लिए भी है और महिला के लिए टैक्स भी है। Hi ma'am, Meghna Mittal from ET Now. The fiscal glide path that you have given is 4.5% by 2025-26, which may be considered slightly bold, but does it also indicate your confidence in continuing tax buoyancy in the coming years? Somanathan has already answered it. Yes, tax buoyancy, as you saw even yesterday, GST collection figures have come. Direct taxation buoyancy is also observed in the current year. That is one thing. I think to the credit of this team, there's been a very robust management of macroeconomics. That certainly bears an impact. So all of us might talk about this particular step or that particular step, but I think together, revenue, expenditure, disinvestment, banking, all of us together have worked in such a way that where you can earn more through tax avoidance related measures
And similarly, where you can bring in more people into the tax net, you are taking steps. Similarly, prudent ways of effective expenditure without cutting down expenditure, committed expenditure or other expenditure, are all ways in which you're making money mean more. And for every rupee that you spend, you get a better set of returns. So I think efficient management also has a very big role to play here. I just wanted to add to your question. The estimates in the budget, the revenue estimates in the budget, do not assume a buoyancy greater than 1 for the coming financial year. It assumes a buoyancy of 1. Gross taxes are expected to grow by the same 10.5%, by which we have estimated the GDP to grow, which is slightly lower than the figure implied by the economic survey. And therefore, we are assuming only a buoyancy of 1. But if the experience of this year is repeated next year, then it may in fact be more than 1. But we have taken a conservative assumption. And I think the very fact that the commitment to 4.5% was reiterated word by word in this budget gives you an indication that we feel that we have the means and the ability to reach that target by 2025-26. I would also point out that many of our expenditure increases are on discretionary spends. We have kept a very tight lid on the irreducible types of expenditure, and therefore there is room in the budget, both on the revenue side and on the expenditure side, for us to reach that fiscal deficit target by 2025-26. And it is not likely that the finance minister has reiterated it in Parliament today. Ma'am, Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. Ma'am, I have two questions. Firstly, on the TDS reforms, you've come out with two specific reforms. For one, 20% TDS on foreign investments. Why has this been introduced? Is it to curb the flight of capital or investments which was going outside the country? And secondly, on students who are going outside to study, on that also the TDS has come, there's a 5% that has been levied, or it has been reduced. There is no change on education, or absolutely not. That's wrong. Your facts are wrong. But what happens to the amount that one spends in staying there as a student? First correct the thing which you've said, because yours is a very powerful voice, and that can spread among your dosts, that can go out. No change has been made for education or health purpose, LRS. Please, I hope my voice is audible much more than Timsi's. Thank you for correcting me, ma'am. But on the foreign capital, on the foreign investment, the TDS of 20%, if you could explain the rationale. I think this question was asked, and I already answered it, to say that this is actually coming from income, and the income tax rates for those categories of people who are using this LRS to send money outside is much more than 20%. And so they were in any case, to pay for the tax. And in case they don't have to pay for the tax, they can always get a refund. It is our impression, and there is enough information to indicate that there are quite a lot of people who are able to make these remittances, but whose tax returns are disproportionately low compared to what they send as remittances. Now that means if you don't collect the tax at source, you have to take measures later to catch them. That is much more difficult. If you are able to make remittances to invest in a property in Manhattan or in a stock brokerage account in Dubai, or if you are going to take a 30-day tour of the world, almost certainly your effective tax rate will be 20%. So, yes. We have learned from both the economic survey and the RBI report that there's a lot of public investment and private consumption. Are you still happy with the private investment? Are you still expecting it to grow? Or do you think for the moment it is only public investment that will go on? Hi, yesterday in the press conference, we answered this question, and we also had a slide up there in the presentation we made yesterday that private capital investment has been improving
every year in the last 3 years. For example, in the first half of 2021, based on quarterly earnings reports filed by listed companies, the capital expenditure was 2.1 lakh crores, which increased to 2.4 lakh crores in 21-22 in the first half, April to September. And 22-23, it has gone up to 3.3 lakh crores. And then you look at the RBI survey on capacity utilization and investment spending plans of the respondents. There is a very clear sign that many private sector companies are looking to enhance their capital expenditure. So both in terms of intent and in terms of actual spend, private capital investment is showing very clear signs of revival. Thank you. Ma'am, this is Ujjwal Narayan from Newsrise. Ma'am, this is your 5th budget, and when you started with, in the first budget, you talk about India reaching to a 5 trillion economy by 2025. So just I wanted to know what is the situation, because yesterday CA has put forward another goal post of becoming a 7 trillion economy in next 7 years. So what is happening to that target? That is my simple question. Say, we are moving along to achieve our targets, both mine and his. We'll achieve, we'll achieve. Good afternoon, ma'am. This is Chetan from India Today Group. Ma'am, while calculating the fiscal maths for FY24, how did you assume the disruptive variables like the crude prices and, of course, China unlocking and its impact on commodity prices? What was the benchmark that you were the thinking behind the rationale? This is a question that keeps coming every budget, and I keep giving you the same answer. That there is no part of the budget mathematics that has a crude price number as an input in any spreadsheet. See, because there is no direct subsidy on any petroleum product. Unlike the fertilizer price or the price of the MSP, these have direct impacts on the budget. The petrol price would have an impact only if it triggers some major change in the tax system. Otherwise, the petrol, diesel, oil prices do not directly affect our budgeting. So it is not that there were days, maybe 10-15 years ago, when there was a lot of subsidy on these commodities. At that time, a crude price assumption was inherent in the budget. Today, there is no inherent crude. The assumption we are making in the budget is only that there will be no subsidies on petrol and diesel, and that global prices will be such that there will be no subsidies. What the global price will be, I don't need to make an assumption. So no assumption has been made. Confusion since last year when people referred to what was said in the economic survey as though it was said in the budget itself. The budget didn't say it then, the budget doesn't say it now. मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। पहला सवाल तो ये कि जब शुरुआत हुई थी एक तरह से मोदी सरकार की, तो कहा था कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे और बहुत ही कड़े मेजर्स लिए गए स्टार्टिंग में। लेकिन आज ये देख रहे हैं कि सरकार ने कड़वे घूंट पिए हैं जनता को खुश देखने के लिए। तो क्या ये चुनावी बजट है, इसको मानती है? और पहला ये, दूसरा ये कि इनकम टैक्स में जिस तरह से जो छूट की सीमा है, जो पहला फेज़ है आपका जिसमें 7 लाख तक की छूट है, तो उसमें वो फेज़ आपको लगता है कि इससे राजस्व पर भार पड़ेगा? कितना भार पड़ेगा, कोई एस्टिमेट है इसमें? We have said it in the budget speech itself as to what is the net revenue foregone. उसका घोषणा ही कर चुके हैं हम, हिडन नहीं रखे। सो वो आ गया है 35,000 direct taxes 37,000 crore, indirect taxes 1,000 crore, additional revenue through indirect taxation measures 3,000 crores, and so net is 35,000 crore. This is Anuradha from Economic Times. In your budget speech, ma'am, you spoke about the review of financial sector regulators. So can you elaborate a little bit more on that? Something? Some of these exercises, when the regulations are brought in, they serve a purpose, thereafter the economy changes. So all the regulators have been doing it as part of their exercise.
but there's a time now to take up a comprehensive review. And you will recall, RBI had formed a committee. They did it in 2020. They came out with a report in 2021. That is an ongoing process, and other regulators also will travel in that direction, that their regulations are what the economy needs today. Whatever tweaking is required, they will take up that steps. There's their own review, not by them. Ma'am, congratulations on your penultimate budget. And ma'am, am I audible, ma'am? Congratulations on last full budget, and I just wanted to understand, you have mentioned, alluded to Banking Regulation Act amendment and Banking Companies Act amendment. Is it an indication that this year we'll see privatization on that front, public sector banking front? And if you could also throw some light on what kind of amendment it will undertake, apart from, allowing public sector bank for privatization. These measures are for improving the governance of the boards and then investors' protection, etc. These are not to do with any disinvestment or the privatization measures. These are the different set of measures. Over a period of time, the things have changed, and the Banking Regulation Act also fall in line, or not fall in line, has to be aligned with the present day needs, what the directors are, who can be there, what their terms are going to be. So those kind of amendments are there. And one component, of course, is on the investors' protection areas as well. Good afternoon, ma'am. I'm Rima Sharma from Potibimba Life. My question, my question is regarding MSME sector in the northeast, especially in Assam. During pandemic, that Assam handloom sector and bamboo sector badly affected. Many artisans forced to close their work. So in your budget, you have saying something, MSME sector, you have given some relief and widen the possibilities. So as Gamusa also getting GI tag this time, so do you have any special relief for the Assam and northeastern artisans, especially in the handloom sector and bamboo sector? In the last year's budget itself, I think for sustaining livelihoods and also making sure that the northeast livelihoods are attended to, we came up with a specific program called PM Divine for the development of northeast, and that was executed through the Northeastern Council. So that program continues, and that will take care of livelihood related, whether it is in the weavers or in any other such community. But after getting the GI tag in the Gamusha, do you have any special package for the encourage to the handloom sector? So that is something which the state government will have to tag along with the existing programs, either through the handicrafts program, the artisan and other things that we're coming up with, for which the rules will come out. Either they can use it, or the textile ministries, I'm sure they can always find out from the textile ministry for GI tagged Gamusha, they can ask for a dispensation. So this is possible, but that is for the state government to interact with the respective ministries. Can you little bit elaborate what kind of I can't elaborate more, ma'am. You should ask the state government to deal with it for the respective ministry. In your budget relief, what kind of relief you have given? Can you little bit elaborate it? In my budget relief. The MSME sector. For MSME or for Gamusha or for GI, what are you asking? I'll send you some information. Ma'am, let's move on with other questions. Good evening, ma'am. Arup from Business Standard. Ma'am, in this year's fiscal policy statement also you're speaking about unprecedented global headwinds and challenges. And again, you have not given forecast for the two succeeding years, in this case FY 24-25 and 25-26, although you have an internal consolidation roadmap. So are we going to see this as a new normal where you're not amending the FRBM Act again?
and you're not giving 2 succeeding years forecast, but you will continue having an internal roadmap. Yeah. Yeah, but you're not amending for the third consecutive year. You're not amending the FRBM Act, and you're not giving 2 succeeding years targets. Yeah, but we have given a glide path, and we are every budget stating whether we are aligning with the glide path given or not, right? So that pandemic was the new normal for 2 years, hasn't it been? Hi, I'm Siddharth from Money Control here. The gross borrowing number is 15.4 lakh crores. Net is the gross borrowing is 15.4 lakh. Net is 11.8 lakh. Especially with real interest rates returning to positive territory in the last few months, with the RBI hiking rates, do you see borrowing costs for companies rising, especially and perhaps the government crowding out the private sector, and could that impact private investments? So I think the question of crowding out, actually the increase in borrowing over the previous year is 8%. The economy has grown at a nominal rate of 15% over this same period. So this is a level of borrowing which I think will not lead to any incremental crowding out. In fact, as a percentage of the size of the nominal economy, the total gross borrowing is actually going to be lower in 23-24 than in 22-23. So incremental crowding out, I think, is not a significant issue, and that I do not think will lead to any impact on borrowing costs in the private sector. This is reiterating that point, that expect the required borrowings for the next year are of the same order what they are in the current year. Of course, the size of the economy has gone up. So it is not that the more money is being taken out of the savings which are available into the economy. So we don't see that impacting because it is of the same order. And even if you go 2 years back and just increase by nominal rates, the net borrowings are of the same order. In fact, they are less than 2% more than the actuals. The figures stated were, I think, for the BE, but actually it will be only, estimates are that it will be less than 2%. Economy is nominally expected to grow at more than 10.5%. So, I mean, that should answer your question. Ma'am, Ishwarya Paliwal from India Today. Ma'am, opposition parties have been calling this Nil Batta Sannata not good enough budget. Your comments? Follow your Hindi. Would you say that again? Ma'am, they said not good enough. Most of the opposition parties for the budget. Ma'am, your comment on that? For what reasons, if I may know? Not good enough for? What reasons, ma'am? If you would like to repeat their words. They have said, ma'am, most of the political parties. I'm saying, if you could please repeat their words and say, not good enough, for what reasons per se? They said nothing for the, they said nothing much for the middle class. What? Most of the, this is what those parties. Ma'am, do you believe India will remain a bright spot, ma'am? Please do. Next question, please. Ma'am, my name is Mukesh and I work for Newsrise. Just wanted to know, is there a component of green bonds in the... does it contain green bonds also? I mean, what would be the component of green bonds? Sovereign green bonds. Repeat your question, please. You interrupted me. So basically, in this overall gross borrowing that we have for the year, what component of that would be in form of green bonds? See, for the current year of $2 billion, one installment has already been done 1 week back, another one will be done a week later. So for the next, and the monies which we are going to raise now through these bonds, $2 billion, will be used for the projects which have been identified. And if those projects require in the pipeline that they require more money, then we will raise money through the green bonds, but that will be part of the overall borrowings which have been suggested. Pardon? There is no target for green bonds for next year. It is something which will evolve as the year goes on. Ma'am, this is Premangshu from Anandavaya Patrika. You have said that your capital expenditure has reached 10 lakh crore, but the interest payment expenditure, that is also
that has also reached 10 lakh crore. And the interest payment burden, it is almost 40% of the revenue received. So do you think it is a matter of concern for? It is always desirable for a government to have its interest payments as low as possible. But you are aware of the reasons for which government had to borrow a lot over the last 3 years. And all that I can say is the borrowings have been used very constructively towards growth-inducing investments and have not been frittered away on unproductive expenditure. Therefore, if the economy keeps growing at the rate that it has started to grow at now, then this is unlikely to be an unsustainable debt burden. We are quite confident that the interest burden will gradually come down as the GDP keeps growing. And to sustain that growth, the quality of expenditure, the quality of government expenditure is increasing. The revenue deficit is falling even faster than the fiscal deficit. So we are actually seeing an improvement in the quality of public expenditure, which will enable us to sustain this higher interest burden, which is a result of history. 2 years of COVID, where the entire globe has seen an increase in interest burden in all governments all over the world. Good afternoon, ma'am. This is Karishma here from Business Today Television. Congratulations to you and everybody for yet another successful budget. Ma'am, you did talk about simplification of the tax regime. So my question is on the capital gains tax regime that was also expected. It was not a part of the budget announcement, but it's expected that a simplification could be done in the coming months. Is that something on the cards? And also, ma'am, secondly, no big bang announcements on cryptocurrency in this budget. What is the kind of update with the consultation paper that had to be submitted also to the FSDC? For your question, first question, I have no answer because it's your expectation. You kept about it for the last few months, and then you want me to answer on that? But the revenue Oh, have they been? They've not told me about it. No. To say now. That's all right, but even then there's nothing to say now. मैम मैं आलोक CNBC आवाज़ से हूँ सर। मैम मेरा सवाल यह है कि जो TDS को लेकर क्लैरिफिकेशन आई हैं और उसमें ख़ास तौर से जो 10,000 का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कई सारी चीज़ों पर ख़त्म कर दिया गया है, ख़ास तौर से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। इसके पीछे क्या रीज़न है? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अभी भी क्या सरकार काफ़ी कॉन्शियस है या ऐसा लग रहा है कि अभी भी टैक्स लीकेज है वहाँ से, या बाकी चीज़ों पर भी जो ख़त्म किया गया है ये TDS के लिए जो 10,000 का एग्जम्पशन, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए TDS जो ऑनलाइन गेमिंग पे है अभी प्रत्येक विनिंग के ऊपर में था, लेकिन जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो कई सारे गेम्स मिला करके एक सेशन बनता है। एक गेम कोई नहीं खेलता है, कई सारे गेम्स जो हैं एक साथ खेलते हैं। तो इसलिए जो TDS अब लागू होगा वो समस्त गेम्स पे सामूहिक रूप से जब नेट जो विनिंग होगा, जो वो अपने पैसा जो उनका जो एक अकाउंट में से वो निकालेगा, तभी उसके ऊपर में देखा जाएगा कि कितना उसने प्रॉफिट कमाया है, कितना उसका विनिंग हुआ है। उसके ऊपर में टैक्स जो है लगेगा और उसी के ऊपर में TDS भी लगेगा। और यदि वो 10,000 रुपये से अधिक है तो TDS पहले लगता था, अब वो 10,000 की लिमिट हमने हटा दी है। तो लिमिट तो हटा दिया है, लेकिन ग्रॉस पे लगेगा और नेट पे लगेगा और प्रत्येक विनिंग के ऊपर में नहीं लगेगा। ये हमने बदलाव किया है। So 2 changes have been made. One is that the taxation will be on the net winnings, because in online games generally you play a series of games over days. You don't play it, just one game and, like, you would be doing, say, race horsing would be, maybe once in a while. But this is over a period of time. So whatever are the net winnings, when you take that money from your account that you have made with the online gaming platform, the tax will be on that. So this is one change. The other change is that
The TDS previously was on each winning, irrespective of the amount, on 10,000 and more. If the winning is 10,000 and more, so some of the online gaming companies were keeping winnings lower than 10,000, say 9,999. So that we have removed. So there is no now threshold on TDS. That is the second change. Hi ma'am, this is Priyashmita from Informist Media. Ma'am, I wanted to know that there has been an upward revision in the small savings estimates for FY23. However, data suggests that there is a shortfall. So how do you plan to achieve it? Yeah, it's a good question, and I mean it shows good awareness of our numbers. I'm happy to see people read our deep statements so with so much attention. It is a good question. What I can say is the market borrowing number is completely firm. That will not change. The remaining numbers have a little bit of fluidity, whether it is small savings, state government provident fund is a very fluid number. See, because if state governments change that number, it affects the overall balance of our funding plans. The market borrowing number is firm. The small savings number is, there is traditionally a seasonality where a lot of small savings comes in the last quarter because people plan their taxes in the month of February and March. So there is usually an upsurge. Will it reach this number or not? You see, these numbers are subject to a number of assumptions. But we are confident that in aggregate, the other sources except market borrowing, the aggregate of them will be close to what we have estimated. And therefore, I don't think this will have any impact on markets. Now, in terms of small savings, again, the date from which these new schemes come into operation is yet to be decided. So there are a number of factors on which the small savings number could fluctuate. But I repeat, it will not affect the market borrowing numbers. No, she's talking about FY 22-23 is my impression. Current financial year. Yes, I'm also talking about that. Again, the next year, 14 months before the end of the year, I cannot be firm on next year's numbers, but they are as firm as we can make them 14 months ahead of time. Well, I mean, if there is a shortfall somewhere, there is an increase somewhere else. We have shown you all the numbers as to how we meet the deficit of this year. How is it going to be funded? I have the statement, you have the statement too, since you have obviously read it, so I don't need to tell you. So that's how we will fund it. So this is a big budget in which something goes up, something goes down. Revenues have gone up, expenditures have gone up, some things have gone down. But in aggregate, as I said, we are confident of being within our market borrowing numbers. We are confident that the deficit that we have projected for the revised estimate is reasonable and will not be exceeded significantly. It will not be exceeded significantly. Beyond that, I cannot give you a pinpoint. You cannot land a Boeing 747 on a helipad. So, it's a huge thing. There will be minor, fluctuations here and there. But at a macro level, our numbers are good. I am confident about our numbers. मैम नमस्कार, मेरा नाम महावीर सिंह है, फ्रीलांसिंग करता हूँ। दो छोटे से स्पष्टीकरण चाहिए थे। एक तो 7 लाख रुपए तक की आय जो आपने कर मुक्त की है, वो दोनों उसमें है, पुराना और नया, या सिर्फ नए में है? ओके। और एक आपने घोषणा की कि जो गाड़ियों के स्क्रैप के लिए सरकार कोई सपोर्ट कर रही है, उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? क्यों इस तरह के उसको बढ़ावा दे रही? मंशा यही है कि एनवायरनमेंट के लिए पुराना गाड़ी को हटाना चाहिए, मगर वैसे बिना इंसेंटिव हटाना भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हटाने में से मुझे क्या फायदा है। सो इंसेंटिवाइज करना उसके लिए। Scrapping of vehicles and replacement of vehicles as well. What is the kind of outlay that will be there and that we'll see in the coming fiscal? I can see there are two parts to it. For the central government, all central government vehicles that are beyond the 15-year age limit will be scrapped.
Those of them that need to be replaced will be replaced. This money is provided for in different departmental budgets because it is not a macro number that is planned centrally. The number is significant. It exceeds 1,000 crores. What it exactly is, I also don't know. I'd have to add it up from several books. For state governments, we are making this part of the scheme for state capital investment. If they need to replace old state government vehicles, then that support will come from this scheme. And they have to meet certain conditions on meeting the national scrapping policy. The aim is to get rid of polluting old vehicles in the government sector. नमस्कार मैम, प्रमोद शर्मा। मैम, प्रधानमंत्री जी का नारा है कि लोकल फॉर वोकल, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफार्म है फ्लिपकार्ट और अमेजन, इनके चलते जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। तो सरकार की कोई ऐसी योजना है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है टैक्स जो मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ इन पे कुछ लगाने का जो लोकल फॉर लोकल के लिए तो जेम में पोर्टल में एमएसएमई को स्थान मिल रहे हैं। वो उनके अपने प्रोडक्ट्स को उनके द्वारा मार्केटिंग आउटरीच करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोविजन दे रहा है। सो उनके लिए पॉजिटिव एक्शन है उधर। Precise numbers I don't have at this point of time, but the scheme is that if there's an arbitration award which has already happened, either of the party, either a government department or a government undertaking has challenged it, or the contractor has challenged it, and that arbitration award is being contested in any court, then depending upon the level of the dispute, a settlement can be reached between the two parties so as to reduce the amount of litigation which will be there. Yeah, it will be a voluntary, see, it is voluntary. Any dispute can be settled out of court by both parties. Traditionally, there are difficulties for government to take a discretionary decision on settling a dispute. So this will be a standardized set of terms depending on the nature of dispute and the level at which the dispute has been settled, or has been where there's an arbitration award, where there's a court award, where there's a Supreme Court award. There are different levels at which there is certainty or uncertainty. We will be coming out with a draft scheme which will be put out for consultation very shortly from the Department of Expenditure. So, no, it is only for domestic. Only domestic disputes. It will not cover international arbitrations or international cases. Definitely not. Thank you. Want both of them to answer for each economic survey from his school of thought and us from our school of thought? We are not going to be talking about comparing the two and giving justification for one. They come from their school of thought and we do it ours, right? I understood the question, but you're trying to link the two which are not so related. That is economic survey, yeah? That is exactly what I mean. The dated security figure will not change regardless of changes in the other figures. That's your second question. On the first question of 10.5, remember there's a difference between an estimate in an economic survey which is given for general guidance and a budget which has to be used to fund expenditure. So we have to have numbers which are
at a higher level of probability of being exceeded than the economic survey. So therefore, our number of 10.5 could come from any combination of inflation and real growth. We are expecting nominal growth to be at least 10.5%. That's the basis on which the budget is presented. Now that can come from multiple combinations. I cannot tell you that it will be 6 and 4.5, or will it be 6.5 and 4, or will it be 7 and 3.5, or will it be 5.5? I mean, these are all, we are reasonably confident that we will exceed 10.5% nominal growth for the purposes of estimating our revenues, which is why we use that estimate. Whatever is stated in the budget speech, it is there, it is 11.8, it has been stated in the budget speech, and I know you have read this statement, so it is there, 11.8. Good afternoon, ma'am. I am Nikun Johari from Reuters. You said that there will be changes to improve governance for banks. So will there also be changes to the Bank Nationalization Act that will enable you to privatize 2 banks that you had announced earlier? And also, ma'am, is there a concern for the government? Our markets have fallen last few days because of decline in Adani Group stocks. So is that a concern for the government, because retail investors have also been impacted significantly because of this? I had answered that question earlier, that the proposed amendments have nothing to do with disinvestment or privatization of the bank. That is a separate chapter. As far as the second question is concerned, we in the government don't comment upon the issues relating with a particular company. तो आप देख रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस वार्ता, क्योंकि आज जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद तमाम स्तर पर हम जानते हैं कि चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हर ओर से आकलन किया जा रहा कि बजट कैसा रहा है इस बार। तो जो सवाल सबके जहन में रहे उनके सिलसिलेवार तरीके से वित्त मंत्री ने यहां जवाब दिए, और जो हमारे आपके जहन में भी सवाल हैं उनको लेकर भी डीडी न्यूज पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दी वो ये कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य देश हासिल करेगा। तमाम अन्य बिंदु उन्होंने सामने रखे जिस पर हम भी अगले 1 घंटे में आपके साथ अगले 2 घंटे में लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट की, जब केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट आज प्रस्तुत किया तो सभी वर्गों को ध्यान में रखा, तभी हर क्षेत्र से सराहना भी आ रही है और साथ ही शेयर मार्केट ने भी बहुत अच्छी छलांग लगाई है। मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव जी। तो आज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि ये जो समर्थ भारत और संपन्न भारत की ओर ये बजट ले जाता है, और उन्होंने अपनी सप्तऋषि जो इस बजट को नाम दिया है उसमें जो 7 प्राथमिकताएं बताई हैं उसका उन्होंने एक बार फिर इस बजट में उल्लेख किया। और इसके अलावा जो रोजगार को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, इस पर भी निर्मला सीतारमण ने विस्तार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश डाला जी। तो लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया अमृतकाल का बजट। बजट में देश के विकास पर 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2023-24 को बताया गरीब और किसान हितैषी। कहा बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल, मध्यम वर्ग के सपने होंगे साकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में दी बड़ी छूट। नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। बजट के साथ वित्त मंत्री ने अमृतकाल में जनभागीदारी और समावेशी विकास का खाका किया पेश। बजट में 7 प्राथमिकताओं को दी गई जगह। समावेशी विकास, ग्रीन ग्रोथ, बुनियादी ढांचे में निवेश, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र और क्षमता विकास पर जोर। वित्त मंत्री ने बीते 9 साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों को रखा सामने। कहा भारत में प्रति व्यक्ति आय में हुआ
2 गुना इजाफा। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें पायदान से उठकर पहुंची 5वें स्थान पर। बजट में विकास और रोजगार के लिए पूंजीगत निवेश में लगातार तीसरे साल बढ़ोतरी का ऐलान। पूंजी निवेश परिव्यय को 33% से बढ़ाकर किया गया 10 लाख करोड़ रुपए। वहीं रेलवे को दिए गए 2.4 लाख करोड़ रुपए। महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का प्रावधान। महिलाओं को 2 लाख की बचत पर मिलेगा 7.5% का ब्याज। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर की गई 30 लाख रुपए। तो ये थी हमारी बजट हेडलाइंस। आइए अब देखते हैं बजट के ही कुछ प्रावधानों को विस्तार से। सबसे पहले एक ओवरऑल तस्वीर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अमृतकाल देश में जारी है और जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब भारत की आर्थिक स्थिति कैसी हो, विनिर्माण क्षेत्र में क्या उपलब्धियां देश के पास हो, पर्यावरण को लेकर भारत की तैयारी कैसी हो, सभी का बजट पर खास ध्यान रखा गया है। तो वहीं इनकम टैक्स वालों का भी नया ढांचा मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया अमृतकाल का बजट। साल 2023 और 24 में देश के विकास पर कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, यानी बजट का साइज 45 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं दुनिया में महामारी और युद्ध की विभीषिका के बावजूद भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री ने बीते 9 साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा। उन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में इस दौरान 2 गुने का इजाफा हुआ है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से उठकर अब 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं उन्होंने अमृतकाल में जन भागीदारी और समावेशी विकास का खाका रखा। बजट में 7 प्राथमिकताओं को जगह दी गई है। ये अमृतकाल के विजन के तहत शामिल किए गए हैं, जिसमें समावेशी विकास, ग्रीन ग्रोथ, बुनियादी ढांचे में निवेश, युवा शक्ति के कौशल विकास और वित्तीय क्षेत्र और क्षमता विकास पर जोर दिया गया है। The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट भी था, जिसमें वित्तीय अनुशासन पर स्पष्ट फोकस रहा। वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान जताया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में इसके 5.9% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में वित्तीय घाटा 4.5% आने का भरोसा भी बजट के दौरान दिया गया। इसकी खास बात रही टैक्स स्लैब में छूट देना। अब 7 लाख रुपए के वार्षिक आय पर टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए की ही थी। नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक 15% और 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। वहीं 37% के सरचार्ज को घटाकर 25% कर दिया गया है। साथ ही 25 लाख रुपए तक लीव इनकैशमेंट पर अब टैक्स नहीं देना होगा। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. और इस वक्त आपको हम सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं, जहां भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंच गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए जो उम्मीदवारों की सूची है उस पर भी लगातार काम हो रहा है। तो आज दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में जो महत्वपूर्ण चुनाव समिति की बैठक होनी है, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसके लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं भाजपा मुख्यालय में। हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, महत्वपूर्ण रहेगी बैठक की सूची तैयार हो जाए ताकि इस चुनावों को लेकर तस्वीर स्पष्ट हो जाए भाजपा की ओर से कि कौन है उम्मीदवार।
निश्चित तौर पर आप इस वक्त सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आज बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें नागालैंड और मेघालय के विधानसभा उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों राज्यों की जो प्रदेश जो कमेटी है वो नामों की अनुशंसा कर चुकी है और आज ही उस सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हम जानते हैं कि नागालैंड में बीजेपी ने समझौते के साथ गठबंधन के साथ चुनाव के मैदान में जाने का फैसला किया है, जबकि मेघालय में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा